Okay. 37. So starting with now the mathematics related to retirement plan. So first rate we know is nominal rate. It is unadjusted pure rate. That's the nominal rate. Then if we have compounding effect over nominal rate, it becomes effective rate. So that's the difference between nominal and effective rate. और सामने इंटरेस्टेड कैलकुलेशन में मैंने लिखा भी है कि कब कौन सा रेट हमें नॉर्मली लेना चाहिए. Now there is one more rate which we use, that is real rate. Rate that has been given by Fisher. Our equation is very simple. Real rate is equal to 1 plus rate of return divided by 1 plus inflation minus 1 into 100. So say for example, our rate of return, say R is equal to 10% and inflation is equal to 6%. How much is the real rate of return? Yes, Gautam sir. You said that this is the compounding effect of one sentence you said. Now please kindly repeat. I'll repeat. See, nominal rates are unadjusted pure rates. Yeah. Right, and effective rates are compounded rates. Effective rates are compounded rates. Got it. Correct. 3.77. Okay, so this is the real rate of return. So one use of this rate is to find out inflation adjusted return. And in this particular subject, our major use of this particular thing is to find out present value of growing annuity. So using this rate, we can also find out present value of growing requirements or growing annuities. So as soon as we reach to a proper point, इसको बहुत properly describe करूँगा. What's the concept? आज ही करना है हमें. And that is the use of the concept, major use of the concept in our curriculum. चलो interest rate को थोड़ा समझते हैं. So nominal rate. Nominal rate is basic rate that is without any adjustment or compounding. So best example is bank FD rate. So now say bank FD rate मुझे बताया गया 6%. So 6% is a pure or plain rate, which is without any compounding. Then that is also not the rate which I am going to receive, because my actual realization will be based on compounding quarterly concept. बराबर. So nominal rate and effective rate के बीच का difference क्या है? The difference is effect of compounding. Correct? So, फिर investment rates. It has always been identified कि दो तरह के रेट हमारे पास होते हैं कि जहां पर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग होती है. सो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग. सो विच आर दोज रेट्स? सो आई विल से एफडी, देन आरडी. These are on quarterly compounding. It is fixed. You don't have to like check bank to bank. Does it vary or not? No. There is always compounded quarterly. Then loans are compounded monthly. Similarly, we have got PPF, which is compounded annually. So the products or the places where compounding frequency can be fixed, they all would carry nominal rates. They all will have nominal rates. अब देखो बैंक में एफडी आप करने जाओगे तो नॉमिनल रेट ही लिखा होगा. लोन्स में भी जो रेट आपको कोट किया जाता है वो भी नॉमिनली होता है हर बार. नाउ देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स कि जिसमें कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है. सो नो और से undefined frequency. So that is like gold. So does gold have any fixed frequency of compounding? कोई बता सकता है गोल्ड कंपाउंड्स डेली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली? ऐसा नहीं होता है. गोल्ड, देन सिल्वर, देन यस रियल एस्टेट, देन stocks, then bonds. Right? These are the products which are not having any fixed frequency of compounding. तो इस पे जो रेट ऑफ रिटर्न हम लिखेंगे वो यूजुअली इफेक्टिव ही लिखेंगे.
because जो भी rate of return से real estate से जो मुझे return मिला, is that nominal or effective? So answer is they are effective. This simple understanding about interest rates. तो बॉन्ड नॉमिनल रेट का होता है ना? हाँ, because trading होता है ना उनका. Bonds are traded products. अच्छा, ये बॉन्ड से बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि like those who are having a good amount of investment in debt mutual funds, you have been at loss now. इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है. हाँ, because interest rate बढ़े, bonds existing जो थे उनके prices कम हो गए and they further decline. So that means bond mutual funds में काफी लॉस हो जाएगा. सर वो हम देख रहे थे ना आईसीआईसीआई गिल्ट फंड वाला, सर वो लास्ट में उसका उसने बदल दिया था, वो सब कुछ लो मैच्योरिटी वाले, मतलब एंड तक उसने मैक्सिमम लॉन्ग मैच्योरिटी तक रखा, लास्ट मंथ ही उसने बदला. खिलाड़ी लोग होते हैं ना, जबरदस्त. ये तो मींस अब सब पता नहीं, मुझे लगता है इनसाइडर इंफॉर्मेशन होगी उसके पास. अब इतना एक्यूरेटली कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये तो इमरजेंसी मीटिंग में इतने बढ़ाया हुआ रेट है, पता नहीं. उसी का पैसा लेते हैं. ओके सर. तो इस केस में सब मतलब हाई कूपन रेट भी शिफ्ट कर देते ना शॉर्ट टर्म के लिए. नहीं, वो तो अलग बात है. आपके पास डेट म्यूचुअल फंड है तो फंड मैनेजर का कॉल है कि उसको क्या करना है. बट यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले ऐसे सिचुएशन में ट्रेजरीज में चले जाते हैं. सो नाउ यू विल be able to get their portfolio once the month of May ends. देखिएगा उनका पोर्टफोलियो, that is going to create a very good study case for us कि like किस तरह से फंड मैनेजर्स ये सब ऊपर नीचे कर देते हैं. ठीक है, चलो. सो ये नॉमिनल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट हुआ. आई होप नो क्वेश्चन. कैन आई रब दिस? यस सर. आगे बढ़ते हैं. नाउ रूल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. सो व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग ऑन मंथली बेसिस, दैट्स कंप्लीटली ओके, नो प्रॉब्लम विद इट. सो व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग ऑन एनुअल बेसिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग ऑन मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअल बेसिस, देयर इज अ प्रॉब्लम. देयर इज अ प्रॉब्लम. एंड इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रहा है? The products which are having annual effective rates. So say for example you are doing SIP in mutual funds. तो क्या, अच्छा 2 साल का SIP रिटर्न फिर कोई मुझे ढूंढ के बताएगा क्या चल रहा है अभी? I think it must be negative now. So monthly, quarterly, semi-annual investment है. So there is some violation which we have to understand now. कि 12% is the rate of return on equity. सो इक्विटी पे यूजुअली रेट कौन सा होगा? इफेक्टिव रेट. ठीक है. नाउ आई एम इन्वेस्टिंग मंथली, सो माय मंथली रेट इज गोइंग टू बी 12/12, दैट इज इक्वल टू 1. सो अगर मैं 1% रेट लेके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, से पीएमटी ले लिया, से एनबी ले लिया, आई बाय 1%, देन हाउ कैलकुलेटर डज इट? तो एवरी मंथ यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 1% एंड देन फर्दर कंपाउंडिंग at the rate of 1% per month. So in this case, your end result is that your annual effective rate will be more than 12%. आप monthly 1% लेके चलोगे तो your annual rate will be more than 12%. That is clearly a violation of the rule because it was already an effective rate. How would you get further compounding on effective rate? This rate is already a compounded rate. Is already a compounded rate, so it should not be fetching any further compounding to you. तो ये गलत हो गया. So if I divide it by 12, it is completely wrong. So इससे एक रूल हम लिखते हैं यहाँ पर, effective rates divided by frequency is a wrong approach. It's wrong approach. Effective rate cannot be divided by frequency. So what is the correct way? So I have to find out
that monthly rate. I have to find out that monthly rate of which effective is equal to 12. So मुझे ऐसा मैथमेटिकल ट्रिक है ये. सो मैथमेटिकली मुझे ऐसा मंथली रेट ढूंढना है कि जिसका इफेक्टिव 12% हो. इसको Concept. So how do I do this? So I'll be taking effective is equal to 12. ये 12 effective ही है. C by Y should be taken as 12 and let me find out nominal rate. 11.39. 11.39. And now that is to be divided by 12. 0.95. 0.95. So now this is correct. So if I take monthly 0.95, then monthly compounding basis पे उसका effective कितना हो जाएगा? 12%. So this is correct approach. So Please repeat that effective that 12. Then next, EFF will be 12. Then C by Y 12. C by Y 12 12. Okay. Then find nominal rate. nominal rate. Okay, got it. Then divide by 12. Correct. So these are the two interesting things which you should note. चलो क्लियर सबको. So any confusion इसमें? So whenever we have monthly, quarterly, semi-annual computation, तो आपको ये ध्यान रखना है और डेफिनेटली विद प्रैक्टिस विल मास्टर इट. चलो अब मैथमेटिक्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. और इसमें हम और कुछ मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सीखेंगे. एंड दिस इज हाउ टिपिकल रिटायरमेंट प्लानिंग इज डन. हाँ, फिर इसमें mathematical complexities can be added, but approach is same. So current age of Mr. Shah is 30 years. His current household expenses are 3,50,000 per annum. He estimates that post-retirement he will need 80% of the pre-retirement expenses. And of course, work-related expenses will reduce. Estimated inflation for his lifestyle is 6%. He wants to retire at the age of 60. He can invest money at the rate of 12% now and 9% post-retirement. His life expectancy is 80 years. So, मैं timeline draw करता हूँ सबसे पहले. So, retirement planning is a 3-step exercise. So, right now, he is 30. Wants to retire at the age of 60. So that means after how many years? 30 years hence he wants to retire. And his retirement life is 20 years.
years to retirement have been 30 and retirement life is 20 years. So step number 1 in this process is to find out how much is the expenditure needed at the time of retirement. So currently they have 3,50,000 as annual expense. Inflation rate has been 6%, and we find out the requirement per annum at the age of 60. $16,08,177 नहीं सर, नहीं? वो आपने वो 80% करने के बाद बताया. Yes sir. हाँ, तो ठीक है. So PV is 3,50,000, N is 30, inflation is 6%, and we find out future value. So that should be the expenditure at the time of retirement. Without that 80%, that is the personal concept. But 3,50,000, 6% inflation say means you want the same lifestyle. Then also you need 20 lakh rupees per annum. And 6% is an ideal inflation rate. 5 to 6%, it's an ideal inflation rate that we shall be considering in real life for ourselves also. अब ये जब स्टेप हम करते हैं ना, नॉर्मली ये उतना बिलीवेबल नहीं लगता है, बिकॉज वी विल लाइक जो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचेगा उसका एनुअल खर्चा इससे ज्यादा ही होगा, राइट? सो इट ट्रांसलेट्स इनटू व्हाट? 25 lakh, 30 lakh per annum expenditure. So on the face of it, people are not ready to accept कि हमको एक साल में 30 लाख रुपए या 25 लाख रुपए चाहिए होंगे once we retire. And they always do mathematics in current value terms. They always do mathematics in current value terms. तो वो सेट ही नहीं होता है कि भाई 10 करोड़ चाहिए, कहाँ से 10 करोड़ आएंगे, ये वो सब. So a lot of trouble here. और ये मैथमेटिक्स सही होता है, तो इसका मैं प्रूफ आपको दे सकता हूँ. Say it is 30 years hence, if somebody is not ready to believe, you can ask that person to look back 30 years. So go 30 years backwards and check कि वो टाइम पे लाइक आपके पेरेंट्स को ही पूछो, लाइक हाउ मच वाज यूज्ड टू बी द एक्सपेंडिचर, चीजों के भाव क्या होते थे, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वेजिटेबल, मिल्क, फिर साथ में ये पल्सेस, सीरियल्स, ये सब चीजों के भाव चेक करो. इलेक्ट्रिसिटी का बिल उनको पूछो. मोबाइल तो था ही नहीं, टेलीफोन भी शायद था नहीं था, पता नहीं, राइट? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. सो लाइक उनका लाइफ बहुत ही लाइक कंजर्वेटिव था, एक्सपेंडिचर वर लोअर. तो उनको पूछो कि वो टाइम पे आपका खर्चा इतना था, अब कितना हो गया. सो दे विल टेल यू कि हाँ पहले 30 साल पहले 5,000 रुपए में घर चल जाता था महीने का, और अभी. So Gautam sir can give us a deep insight over this. In 87 February when I joined, I got my first salary 2,800 something. Sir, in which year? 87 February. 87, year 87, and that was 2,000? 800 and something. 2008. That is it. So उससे हमारा घर चल जाता था. Now I get around 1,20,000. So now your monthly spend is? Monthly spend is around 50 to 60,000. है ना? So अब मैं 60,000 कर लेता हूँ. So you can understand the multiplying effect. And sir is like, sir, how far are you from retirement? हम next February retire हो रहा हूँ. अच्छा. This is the position. So this is the clear multiplying effect. So 3,50,000 का 20 lakh हो जाना ये बहुत नॉर्मल है. But yes, most of the people understand the amounts in today's term itself. So that has been the reason it looks very big. लोग ऐसा बताएंगे हमारा तो पूरा अभी सेविंग 20 लाख का नहीं है और एक साल का खर्चा 20 लाख बता रहे हो, कैसे होगा? ठीक है. सो ये एक पॉइंट हुआ, दैट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस. Now next is that it has been suggested that this family would need 80% of the expenses after retirement. ठीक है, so उसको 80% कर लेते हैं, and that is required for 20 years.
required for 20 years, and are they growing with inflation after retirement? So say roughly 16 lakh is needed here, then after a year, will the family require same money or will be more than 16 lakh? More than 16 लेना, inflation तो बाद में भी शुरू Inflation रहेगा. बढ़ेगा. So every year his requirement will increase at the rate of 6% to maintain the standard of living. If he draws the same amount every year for all the 20 years, then year on year his standard of living is declining. So that is not the right approach. So we have to ensure that year on year withdrawal from the accumulation जो है, that should also increase with inflation. अब उसका छोटा सा मैथमेटिक्स मैं आपको सिखाता हूँ पीछे. So let us turn the page and it is behind it. So question जो हमारा चल रहा था उसको थोड़ी देर पॉज करते हैं. So we have got all together different data. Say for example, requirement today. So year 1 का requirement, और ये सब कुछ मैं beginning में लिख देता हूँ. So it's on beginning. So year 1 का requirement, that is on the timeline, it is required at 0, 1, 2, 3, 4. So these are the requirements on the timeline in this way. बराबर? अब देखो, inflation rate is 6%. Inflation is equal to 6% and rate of return is equal to 9%. ये हम common assumption रखते हैं. So your yearly requirement will be immediately 10,000, then 10,600, 11,236, 11,910, and 12,625. So this all money have been increased at the rate of 6%. Now next step is to find out the required amount to achieve this target. Done, Subhangi. So I have to find out now present value of all these requirements. And this will be, ये तो 0 पे ही है. So present value is same because the only timeline कुछ इस तरह से 10,000 is here itself. तो उसका PV भी 10,000 ही होगा. इसका हमें PV ढूंढने की जरूरत नहीं है. Then this 10,600 at the end of year 1. तो इसका PV एक साल के लिए ढूंढना पड़ेगा. So just confirm, is it 9725 when I find present value at the rate of 9%? Same 9725? Yes. Yes, sir. Correct. Then similarly, second year पे अब हम count नहीं कर रहे, just guiding you. So उसका भी present value हमें ढूंढना है. So that amount will be 9457, then 9197 and 8944. Total happens to be 47,322. That is to be deposited today, so that year on year growing requirement can be met. So this is known as corpus. Correct? This is known as corpus. अब इसका एक short method, as I said, इसको थोड़ा detail में सीखना है हमें. So I'll guide you with that. फिर से timeline drop. So first amount required is 10,000. Then year 1 के end पे जो मुझे amount चाहिए, it is increasing at the rate of 6%. So there is an amount. Then year 2 पे मुझे जो चाहिए, that is further increasing at the rate of 6%. There is an amount. And same is going to be there with year 3, year 4 and so on. अब मुझे ये सब amount के लिए present value ढूंढनी है. So what is the rate at which I find out present value? So that is 9%. So this amount is discounted at the rate of 9%. In second year पे जो amount थी, that is discounted for 1 year at 9%.
Then further for one more year at 9%, so it will reach to 0. Third year पे जो amount है, that is to be discounted at 9%. Further 9% and one more 9%, so will reach to 0. And then we make a total of all, will be getting this amount. But intuitively ये देख के हमें ऐसा लग रहा है कि 6% से हम खर्चों को आगे बढ़ा रहे हैं. So inflation is 6%, coming backwards by 9%. So if we apply this mathematically, let's try to check does it happen or not. तो ये दोनों का net कर लेते हैं. So let me not give inflation effect in isolation. जो ऊपर हमने टेबल किया वो तो आइसोलेटेड इफेक्ट वाला था जिसमें एक एक चीज को हमने इंडिविजुअली इन्फ्लेट किया प्रेजेंट वैल्यू ढूंढी. बट इफ आई डोंट वांट टू डू दैट वे, मैं मेरे डिस्काउंट रेट में जो 9% से प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ रहे थे वो डिस्काउंट रेट को 6% से एडजस्ट कर देता हूं. सो इन्फ्लेशन का इफेक्ट मैं रेट में दे रहा हूं. सो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आप दो जगह पर दे सकते हो. वन इज दैट कैश फ्लो पे और दूसरा किस में, रेट में. जो फर्स्ट हमने टेबल सीखा ऊपर वाला, जो टेबल हमने देखा वो कैश फ्लो पे इन्फ्लेशन इफेक्ट देने वाला था. सो वेर इन इंडिविजुअल कैश फ्लो को हमने इन्फ्लेट किया एंड देन फाउंड प्रेजेंट वैल्यू. सेकेंड मेथड विच आई एम इंसिस्टिंग यू टू नो इज दिस वन, कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट मैं रेट में दे देता हूं तो अब इंडिविजुअल कैश फ्लो को मुझे इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So say PMT 10,000 in beginning mode, n is equal to 5. अब मैं inflation adjusted rate ढूंढता हूँ. So that is 1.09 divided by 1.06 minus 1 into 100. So this rate is real rate. So is it 2.83 approximately? Yes, sir. Yes, sir. 2.8301. We find out present value. You will see that is producing same answer for us. करेक्ट. Yes, sir. सो अब यहां पर नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या क्वेश्चन आता है, ये 10,000 तो हमें ईयर ऑन ईयर चाहिए नहीं. वी वांट 10,000 टू ग्रो विथ इन्फ्लेशन, बट हमने तो फिक्स 10,000 ले लिया. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज दैट इट्स अ मैथमेटिकल शॉर्टकट. व्हाट इज द आइडियल लॉजिकल अप्रोच? ये वाला. बट क्या 20 साल का टेबल बना पाओगे एग्जाम में? Absolutely no. So we have to use the mathematical shortcut. So it is producing the same result. हम inflation individual cash flow को नहीं दे रहे. But other than that, what we do is, instead of that, what we do is that we are adjusting the rate of interest. And we try to check, does it produce same answer? And yes, it is. So एक और concept हमें मिल गया. So it is, what did we do? We found present value of growing annuity using real rate. Using real rate. That's the approach. और यही एग्जाम में हमें यूज करना है. So going back to our original question, ये तो कुछ मैथमेटिक्स हमने सीखा. So PMT हमारे पास है, n is 20. Now I by y, you have to find out present value of growing requirement. So 2.83 मैंने ले लिया. This is real rate. ये कौन सा rate है? Real rate है. And let us find out PV. So this is the corpus that he needs at the time of retirement. 24993906.78. 7 लाख. फिर से बोलो. 2 करोड़ 99 24 24. अच्छा एक 2499 3907. Yes, sir. Same answer. same. So this is the amount of money this family would need at the time of retirement. Correct? Now next step is that we have to make investment for this. Annual investment ही हम अभी फिलहाल गिनते हैं. So say this amount becomes which value? Future value. He is right now 30. He has to start investing something per annum from today. So n is equal to 30
इन्वेस्टमेंट रेट हमें दिया गया है 12% इन द क्वेश्चन एंड वी फाइंड आउट पीएमटी इन बिगिनिंग मोड. $92,469. Is that the common answer? Yes, sir, 92469. बस मस्त है. So that's the answer. सर तो डिपॉजिट जो पैसे करेंगे हर साल 30 साल तक वो भी बिगिनिंग में करेंगे और Beginning. रिटायरमेंट में जो विड्रॉ करेंगे वो भी बिगिनिंग में ही करेंगे. Yes. सब कुछ बिगिनिंग में करना है, उसमें रियल रेट लेना. So is this mathematic clear to us? यस सर. अरुण क्लियर हुआ? यस सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो 3,50,000 का इनिशियल फेज पे हमने कैलकुलेशन किया, 30 इयर्स में हमारा 20,000 उतना रेट चलेगा मार्केट तक, उतना वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट होगी आफ्टर. हाँ 20 लाख का. यस. उसके बाद ये 20 इयर्स में आपने ये 2.83 जो किया है, ये तो वो पीरियड है ना जो 60 इयर्स से 80 इयर्स के बीच में 20 इयर्स हुआ. हाँ 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 वो है ये. है ना, उसी का फिर वो डेटा निकाला कि भाई फाइनल वैल्यू कितना होगा फ्यूचर में. रिटायरमेंट के टाइम पे कितना चाहिए. ओके. So ये प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. present value. And this is the amount that he needs at the time of retirement. Then next step is that we have to find out कि अब आज से कितना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो ये गोल अचीव हो जाएगा. ठीक. ओके क्लियर. ठीक है. अब फटाफट ये हमारा मैथमेटिक्स क्लियर हुआ. Then some of the concepts have been written related to loans. अब लोन में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. ग्रोइंग एन्युइटी एक क्वेश्चन आएगा तब हम उसको ले लेंगे. So let us start with these questions. So question number 1, we have to find out real rates. Is it 17.14? Yes, sir. Yes sir, it is 17.14. Okay. So question number 2. रेट तो पहले क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था. 23 और 5 के बीच का रियल रेट ढूंढना था. देन क्वेश्चन 2 सेज, लंबा टेक्स्ट है, पढ़ते हैं. चलो. So Mr. Sachin age 30 wants to retire at 45. He wants to maintain his present living standard. He spends 5 lakh a year. He is expected to live up to 75. Inflation is 5%. Return is 7%. इतना स्टोरी देने के बाद पूछा रियल रेट है. So find out real rate between 5 and 7. 7 and 5, sorry. Yes, sir. 1.9, sir. आ गया. 1.9. इजी है. इनिशियल 10 तक तो इजी चलेगा. फिर मेरी जरूरत पड़ेगी आपको. सर ये जनरल क्वेश्चन कि अगर कोई ऐसा बोले रियल लाइफ में कि माय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ही रखनी है और 45 एज पे रिटायर हो जाना है, तो ऐसी चीज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो 75 ईयर से और लंबा. एक लाइक यहाँ पर ये जो बुक आपके पास अभी पहुंची उसमें अब कुछ आर्टिकल्स मैंने कॉपी किए हुए which are discouraging to retire before 60. Okay. In fact, one should think of retiring at the age of 65 or 70. Okay. क्यों? उसका एक रीजन बताता हूँ कि 60 पे रिटायर होना ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है. ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है. तो हमारे माइंड में ये कैसे 60 एज ए नंबर कहाँ से आया? गवर्नमेंट वाले. हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स में, गवर्नमेंट के रूल्स में सबको रिटायर 60 करने की बात चली. अब और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो. 60 as a retirement age was set in which year?
तो बहुत साल 50-100 साल पहले शायद। सो मेरे हिसाब से 50 साल पहले का या उससे भी पहले कमिंग अपने इंडिपेंडेंस के टाइम के आसपास से 58 हमारा रिटायरमेंट एज रखा हुआ गया था। यस सर। राइट, सो 58 वाज सेट एज अ रिटायरमेंट एज। अब ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब 58 रिटायरमेंट एज रखा गया था इंडिया का वाज बिलो 50। करेक्ट। देन इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग से 51, 52, 53 से बढ़ते बढ़ते लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 70 प्लस हो गया। So Yes. 58 or 60 was set as retirement age when average life expectancy was way below it. वो 33 ईयर ही था at the time of independence. So अब same, see that age has no change, but average life expectancy of people has been more than 70. तो अब इसमें गवर्नमेंट उसके कोई भी स्कीम में 70 रिटायरमेंट नहीं रखेगा। बट यस, इट इज अ लॉजिकल थिंग कि रिटायरमेंट एज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जितना तो होना ही चाहिए। सो नहीं, वो बात सही है, लेकिन अगर ऐसा ही कहे कि मुझे सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर ही रखना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है किसी का। उसको पूछो भाई तेरे घर में कितने लोगों को बाईपास सर्जरी हो चुकी है, कितने लोगों को डायबिटीज है, वो सब लिस्ट दे, पूरा चेकलिस्ट की हाँ ये प्रूफ दिखा रहा हूँ कि 75 तो बहुत है, तो ठीक है। okay, okay, okay. One more question I have. Yes sir, yes sir. कि फॉरेन में क्या सिस्टम है? Is there any age on 60 that people retire? See, usually, because I don't know exact age, but usually I have seen my brother suggesting this particular thing कि वहां पर 70 तक लोग आराम से काम करते हैं। They keep working up to 70. Like अभी मेरे ब्रदर ने एक डॉक्टर से उनका प्रैक्टिस बाय किया। So that doctor retired from his practice 70 plus. कि अब बस अब मुझे काम नहीं करना है फाइनली, दैट्स द रीजन ही सोल्ड हिज प्रैक्टिस। सो फैक्ट यही है कि सर्विस इंडस्ट्री है या बाकी कोई इंडस्ट्री है, पीपल कीप ऑन वर्किंग 65 से 70 तक तो लोग आराम से काम करते हैं। Actually, other than service industry, people do not think of retiring at 60. They work. Never. Yes. And then In work, India, mostly we are in service industry, particularly in our eastern side. So we set in our mind कि 60 हुआ मतलब retirement हो। बट वो थोड़ा माइंडसेट अभी चेंज होने की जरूरत है। वी एटलीस्ट 65 तो हमारा वर्किंग लाइफ होना ही चाहिए। 65 तक तो काम करना ही है। Then slowly, gradually, we can reduce workload, and at 70 probably we can think about that. अब बस अब कुछ काम नहीं करना है, because the mathematics that we are going to see will not support it. Unless कि windfall आ जाए किसी के पास तो अलग बात है। बाकी नेचुरल प्रोसेस में retiring at 60 is also very difficult. Or jolly retirement, that kind of retirement means not service, means that I will not do any effort to do any income. People then becomes old, my feeling. Because करने लायक तो कुछ नहीं है ना, अभी पैसा है हम खाएगा, and now I have to think for my ये feeling also makes it. My plan to retire at 80, क्योंकि हम देखा 80 तक का आदमी लोग effective रहता है, वर्किंग कंडीशन पे रहता है। So if health is good, there is no point of retiring. तो इसीलिए ये हमेशा अब इंसिस्ट किया जाता है। ये तो एक अब पहले से थोड़ा अब सबको बताया जाता है कि यू शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ कॉन्शियस रहना, रेगुलर लाइक एक्टिव लाइफ जीना। इट्स नॉट लाइक गेटिंग इनटू जिम एंड लाइक स्वेटिंग, वो भी लाइफ नहीं है। बट बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज है। यू कैन हैव डेली 1 hour वॉक, यू कैन डू साइकिलिंग, योगा, प्राणायाम। ये सब रूटीन में आ जाने से दैट यू कैन डेफिनेटली एंश्योर दैट यू लिव हेल्दी लाइफ। तब जाके 70 तक का वर्किंग लाइफ होगा। अगर रिटायरमेंट तक हेल्थ चला गया तो देन इट्स अ नाइटमेयर।
because then doctors are there to make money. Purpose is less. हमारे पास दो डॉक्टर हमारे बैच में, so they'll up and but बट आप जो बोला ना एक्टिव रहना, एक्चुअली somebody has taken retirement in mind and active रहना ये very difficult. But somebody इसमें that मैंने I देखा- am engaged, आप जो बोल रहा है जो हमारा इसीलिए retirement, so called retirement should be postponed, it is very clear. वो retirement मन से नहीं आने से people will remain active. Very clear. मैं थोड़ा ऐसा कह रहा हूँ कि आप एक्टिव रहना और मनी पैसे के लिए काम करना उसको आप अगर सेपरेट कर दीजिए ना, वी शुड रिमेन एक्टिव टिल आवर हेल्थ परमिट्स बट यू शुड बिकम फाइनेंशियली फ्री एज सून एज पॉसिबल. बराबर. सी वी आर स्टडिंग दिस, तो हमारे लिए तो अब सी इतना पढ़ने के बाद राइट अगर हम लोग प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग ना कर पाए तो लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर अस. बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री एज अ होल, कि जो लोग माइंडसेट लेके बैठे कि 60 पे रिटायर हो जाना है, तो इन जनरल लाइक जो केसेस आते और जो देखते उसमें बहुत डिफिकल्ट है 60 पे रिटायर हो जाना, बिकॉज दे पीपल बिल्ड और व्हाट यू कैन से दे सिट ऑन पाइल ऑफ लायबिलिटीज. And once again, I repeat this concept that housing is the biggest enemy of retirement planning. It has been and it will be in our country. So, मजेदार, हमारा सब्जेक्ट इतना क्लासिक है रिटायरमेंट प्लानिंग कि वैसे 3 स्टेप में हमने मैथमेटिक्स कर दिया, ये रिटायरमेंट प्लानिंग है, बट व्हाट आर द चैलेंजेस इन डूइंग दिस, वो हमारा सब्जेक्ट है, नॉट द प्योर मैथमेटिक्स. चलो क्वेश्चन नंबर 3, इट्स वेरी इजी. 30,000 at the end of 3rd year and 50,000 at the end of 5th year, these have been the 2 requirements and we have to find out present value of both. चलो कर लो जल्दी जल्दी. So 62 551. क्लियर आ गया क्वेश्चन 3 का आंसर सबका? So move on to question number 4. An employee age 35 invested 10,000 in a saving instrument. The interest during the first 5 years is 8% and thereafter 6% per annum. What amount would he get on retirement at the age of 58? चलो करो तो. तो 2 स्टेज में करना है हमें. So 35 से 58, the total period is 23 years. So first period is of 5 years, another period is of 18 years. Yeah. 4199.61. Hmm. थ्री 9665 आ रहा है. नहीं नहीं सर. अच्छा सर, एक मिनट, सॉरी सर, पहले 10,000 पीवी लिया, 8% आई बाय वाई से मैंने एफवी ढूंढा 5 साल का, फिर जो एफवी आया उसी को पीवी कर दिया और 6% आई बाय वाई लिया और 18 ईयर को एन रखा और एफवी ढूंढा.
तो ऐसे में बिगनिंग मोड में तो नहीं कैलकुलेटर। सर आपने रेट चेंज किया था 8 वर्ष से। 8 and 6 ही करना मुझे सर वो कैलकुलेट कर दिया। नहीं नहीं आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ होगा सर। 41,939 ही है। चलो मूव फर्दर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 50,000 is invested at the rate of 5% per annum. After 7 years, the interest rate was changed to 5% per annum, convertible half yearly. After further period of 3 years, the rate was again changed to 6% per annum, convertible quarterly. Find the accumulated amount at the end of 15 years from commencement. So 3 stage में चलेगा. So जो पहला period है हमारा, that is of how many years? 7 years. 7 years, wherein it is 5% per annum. उसके बाद दूसरा पीरियड जो है वो 3 years का है, wherein 5% compounded half yearly है, and 6% converted quarterly, that is for the rest period. Total period is 15 years. So initial 7 years, 3 years, and 5 years. That's the period under consideration, and I've set a proper what you can say steps for you. तो आप देखो तो FV आ रही है. Check the final answer. Do it. $10,989.24. Same, sir. Sure, wonderful. अरे इतना डिफरेंस चलता है क्या लास्ट में 1.15 और 0.24? बहुत आराम से चलता है. Question 6. इसमें ये पूछो. तो मेरा 1,16,000 सर पता, मुझे शायद आराम से करना पड़ेगा। मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, मुझे शायद कहीं 9890 बराबर सर मैं बाद में चेक कर लूंगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आई विल गेट बैक टू यू। Now question number 6. Aditi is 30 years old. She deposits 25,000 at the beginning of each year in a deferred annuity scheme as a part of her retirement planning. How much will be in the account after 25 years if it earns 9.5% compound annual interest? So 25,000 is PMT in the beginning mode. N is equal to 25 and rate is given. We have to find out FV. सर डिफर्ड का मतलब? डिफर्ड एन्युइटी मींस आज आप इन्वेस्ट करो, वो एन्युइटी खत्म हो जाने के बाद आपको पेमेंट मिलना शुरू होगा. ओके यस सर 2497857 करेक्ट. સર આપણે આજે 3 સ્ટેપમાં કરીએ છીએ સર. એ એફઈ આવે એ તરત પીવી લઈએ માઇનસમાં. યસ એટલે એ હું એફઈ આવે ને તરત પીવી દબાઈને માઇનસ દબાઈને પીવી. That's okay, completely okay. That's in fact a short way, but then you have to remember which data is gone where. Otherwise things might go wrong. હા પછી I by y ને એન તો આપણે કમ્પ્યુટ કરવા જ પડે છે. Then you have to do. Question number 7. That is also very easy. Basic level question. So Mr. Gupta deposits 25 lakh
in an annuity certain plan for 25 years. So for 25 years, this plan is going to pay you the money for sure at an yield of 6% per annum. What would be the amount of annuity if he wishes to receive annual annuity payments in arrears? Sorry. Arrears, that means end mode, and advance, that is beginning mode. So you would get the answer in both the modes. One is end mode and another is beginning mode. So that is also one point I've kept here, just a smaller trick, that don't erase the data, but just change the mode and find out one more PM. One nine five six balance. करेक्ट है. Correct है? Clear? अभी आगे. One more question to do. Mr. Khan invested 5 lakh in a plan allowing withdrawal of 50,000 at the end of each year, giving a return of 8% per annum. How long the money will last in the said plan? क्या ढूंढना इसमें मैं? The number of years. N. So we are given PV, we are given PMT, rate is given to us. They are asking us to find out N. N में एक रूल मैंने आपको दिया था, ये हमेशा ध्यान रखना है कि N कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए. N has to be positive always. आपका N प्लस है या माइनस है? 20.91. ये ठीक है. 20.91. हाँ, ये ठीक है. कमल ने जो N ढूंढा वो नेगेटिव है. Yes, sir. So that's what I wanted to say कि आपको N हमेशा पॉजिटिव में लाना है. So data plus minus properly set करना है. Correct? Correct. अब ठीक है. So move further. Find the present value of an immediate annuity of 10,000 payable quarterly in arrears, that is end of the period, for 9 years at the rate of 9% compounded quarterly. So ये जो हमें मिलने वाला है quarterly, उसका हमें PV ढूंढना है. Then there is one more thing we have to understand कि 9% rate जो हमें दिया है वो investment rate है. Right, so it is an investment rate. तो ये effective rate होगा. राइट, एन्युटी का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो इफेक्टिव होता है. सो दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4. हमें ये पूरा सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज न्यू इन दिस क्वेश्चन. इसका एक ऑल्टरनेटिव भी सिखाता हूं आपको. थोड़ा रिस्की है बट स्टिल मैं आपको सिखा तो देता हूं. सो वॉट एवर इज लाइक्ड बाय यू कैन बी यूज्ड. The 24,775.82.
आ गया सबका 24775? यस सर. Yes, sir. कोई ऑल्टरनेट मेथड इसका? सी कैलकुलेटर को मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूँ एंड ही विल डू दैट फॉर अस. दैट इज दैट कॉन्सेप्ट इज P by Y C by Y. थोड़ा रिस्की है बट सीखते तो जरूर है. क्लियर TVM कर दो एंड से PMT is equal to 1000, N is equal to 36, I by Y is equal to 9. ये 9 लेना, ऐसा मत सोचो कि ये 30 किया ये क्यों 9 किया, नहीं 9 लेना. अब आपको ऐसे प्रेस करना है, सेकंड करके I by Y बटन प्रेस करना है. चलो क्या आया स्क्रीन पे? P by Y. हाँ, P by Y. P by Y का फुल फॉर्म पेमेंट्स इन अ ईयर, number of payments in a year, that is P by Y and that is 4. अब रेट जो मेरे पास ऑलरेडी इफेक्टिव है तो अब इसको फिर से मुझे कंपाउंड करने की जरूरत नहीं है. सो डाउन एरो करोगे तो C by Y आएगा. राइट, सिंस इट इज ऑलरेडी एन इफेक्टिव रेट, आई डोंट वांट एनी फर्दर कंपाउंडिंग्स, तो मुझे इसको 1 कर देना है. तो C by Y is 1. ठीक है, अब CEC बटन प्रेस करके बाहर निकल जाइए एंड कंप्यूट PV. तो इस केस में से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, इफेक्टिव को सीधा आंसर आएगा. बट by y 1 केम ले दियो एक खाली. because it is already a compounded rate. So Yes, sir. अब मुझे फर्दर कंपाउंडिंग, अगर ये नॉमिनल रेट होता था ना, से फॉर एग्जांपल इट वाज अ नॉमिनल रेट, देन आई वुड हैव टेकन 4 इंस्टेड ऑफ 1. ओके, दैट्स द होल आइडिया. इजी है, बट अब आपके एक भी क्वेश्चन के आंसर अच्छा, C by Y का एक बार वापस बता दो कि सर इसको कब चेंज करेंगे? जब रेट आपका नॉमिनल होगा तब आपको उसको चेंज करना है, बाकी इसको 1 ही रखना है. इफेक्टिव रेट होगा तब 1 ही रहेगा और नॉमिनल होगा तब उसको चेंज करना है ना. हाँ, ओके, जबरदस्त है ना. सो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जस्ट ये क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट हम करते हैं. से यू आर इन्वेस्टिंग मंथली 100 and which is compounded quarterly. Rate of interest is equal to 6% और आपका जो पीरियड है that is equal to 5 years. तो अब ये जो पोस्ट का रेट है वो तो नॉमिनल है, इट इज नॉट इफेक्टिव. तो इन्वेस्टमेंट मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू. तो कैसे करेंगे? तो PMT इज केप्ट एज 100 बिगिनिंग मोड, क्योंकि आज से ही हम करेंगे तभी इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा. N is equal to how many payments in total? N is equal to number of payments, so that is 60. अच्छा, monthly and 5 years. अब हमारा जो I by Y है उसको एन्युअली लेना है 6. अब P by Y मैं चेंज कर दूंगा, हाउ मेनी पेमेंट्स इन अ ईयर 12, हाउ मेनी कंपाउंडिंग्स इन अ ईयर 4, एंड देन इसमें से एग्जिट करके हम FV ढूंढ लेंगे, यू विल गेट द आंसर. सो रियल लाइफ के जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो दे आर आल्सो टेकन. P by Y will be 12. Then and C by Y should be 4. compounding. 4. Okay.
सर ये जो हमने पी बाय वाई और सी बाय वाई सेट किया है उसको सर वो क्लियर टीवीएम करने से नहीं जाता है। नहीं जाएगा, ये कर लो, इसका आंसर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है। 6972। नहीं 700 समथिंग आया था आंसर तो। 6971। रत्नानी सर, आपका आंसर? सर मैंने इरेज कर दिया, मेरा थोड़ा कुछ 700 समथिंग 7000 समथिंग आया था। आज सर को या सर के कैलकुलेटर को, दोनों में से किसी को आराम की जरूरत है सर ज्यादा। थक गए हो सर आज? नहीं सर, सर 7006 सर मैं बिगिनिंग मोड में कैलकुलेट कर रहा हूँ और मेरा एफवी 7006 ही आ रहा है। सॉरी सर, बिगनिंग में 7006 एंड मोड पे 6971। ये सर का आंसर ठीक है, चलो। यस सर, यस सर। सर को हमने बेकार में टेंशन में डाल दिया। थैंक यू सर। सर क्या था आंसर आपका? 7006.35 7006। So this is the answer. अब क्लियर टीवीएम कर दो, इसको हटा देते ना सब कुछ, एंड फिर से सेकंड करके आई बाय वाई आप ओपन करो। तो ये कैलकुलेटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका पी बाय वाई सी बाय वाई 12 और 4 ही दिखाएगा, वो नहीं जाता है। दैट इज देयर एज 12 एंड 4। अब आगे हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे इफ आई डोंट इरेज दिस। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। सो आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफॉल्ट पी बाय वाई एंड सी बाय वाई। सो डिफॉल्ट ही में दोनों में 1 1 होना चाहिए, या आप इसको 1 1 एंटर करके कर दो, या ये ओपन है तो सेकंड करके CEC बटन प्रेस कर दो तो वो क्लियर वर्क हो जाएगा। देन दैट विल बिकम 1 and 1। सो पी बाय वाई सी बाय वाई वैसे तो हैंडी है, बट उसको इरेज करना भूलना नहीं है। सो उसको क्वेश्चन में जरूरत पड़े उसके बाद फिर से 1 1 कर लेना जरूरी है। 2-3 क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, फिर रियलाइज होगा कि शायद पी बाय वाई सी बाय वाई में पंगा हो गया था, तो प्रॉब्ली टाइम इज शॉर्ट इन आवर एग्जाम। सर सेकंड CEC से क्लियर हो जाता है ना? हाँ, वो 1 1 हो जाएगा। यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज द डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी। सो डिफॉल्ट वहां पर 1 1 होता है। करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्टली 3 स्टेप जो क्वेश्चन हमने किया था वैसा है। चलो ट्राई टू डू दिस। आई हैव सेट एवरीथिंग फॉर यू। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। 3 स्टेप है। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस, फाइंडिंग कॉर्पस एंड देन फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स। सर 1,19,535 आ जाता है। आ गया ना? परफेक्ट। तो सर मेरा गलती हुआ था, वो एंड मोड में पीएमटी ढूंढा था, फिर दोबारा मुझे करना पड़ा था। चलो इसमें स्टेप वाइज हम चेक कर लेते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? 2,50,000। हाउ मच इज इट? सॉरी, 2,50,000। एफई हो 108048.5.59। 485 485.59 चलेगा, ठीक है। सो इट इज 10,80,000। Okay. Now this should be taken as PMT. N is equal to 20. अब रियल रेट जो है मेरा दो रेट का होगा, दैट इज 8.5 एंड 5। चलो ये रियल रेट कितना था बताओ तो। 3.33। 3.3। करेक्ट। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट PV। 161145 सर। हाँ हाँ 40.96। ठीक है। सो इट इज 1,61 लाख। करेक्ट।
Yes, sir. And then this is to be taken as FV और ये final answer आएगा 119535 beginning mode. चलो और किसी का नहीं आ रहा हो तो पूछो मुझे. Shweta, are you there? Yes, sir. अच्छा हो रहा है ना? Yes, sir. लास्ट नहीं होगा. Yes, sir. अच्छा आपका P/Y C/Y सब चेंज हो गया था. That is 1 राइट. हाँ बाकी सब आंसर आ रहे हैं. That means वो चेंज हो ही गया. So 161 that answer is there. Yes, sir. 1 crore 61 lakh is there. Hmm. Okay, fine. So clear TVM करके करना है. So I think वो clear TVM करना रह गया है. TV में डेटा अभी पड़ा हुआ है and that has been the reason you are not getting the answer. Clear? Yes. Got it? Yes, sir. Wonderful. લાસ્ટમાં PV 0 કરવું પડે સર. हाँ तो તમે ડાયરેક્ટ પંચ કરતા હતા ને એમાં. Right. So this has been interesting question which we have done. One more. This is quite an easy question. We can solve it quickly. An employee age 30 is currently spending 1 lakh per annum. If the rate of inflation is 5% and wishes to maintain the same present standard of living throughout his service, what amount would he be requiring to spend during the first year of his exit from service if the retirement age is 60 years? So क्या पूछा है क्वेश्चन में वो बताओ सबसे पहले. What has been asked? Inflated value of the 1 lakh rupees. Exactly. So that means they are asking just step 1. हमारे 3 स्टेप प्रोसेस है उसमें से एक ही स्टेप पूछा गया है. Only 1 step. आगे आंसर. Yes, sir, correct. नेक्स्ट. अब ये सुमन वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. We'll read it quickly. So Suman, age 30, is working in an MNC and wishes to set aside some fixed amount at the beginning of each year towards retirement planning. So कुछ amount उनको हर साल invest करना है. He is currently spending 2,40,000 per annum and wishes to raise his standard of living by 2%. ये नया आया. So inflation अलग चीज है. And you also understand there is one more thing that is called standard of living. So that is also raising our expenses. Hence, it is to be added to inflation. तो इसमें देखते हैं inflation कितना है. 5% हो जाए. हाँ. So he is 30, wants to retire at the age of 55. The average rate of inflation expected to be 3%. Inflation is 3%. So total inflation that is faced by him is 5%. So 3 plus 2, 5. If he wants to maintain 90% of his standard of living, what would be or what he would be enjoying on retirement, assuming no provision for inflation thereafter?
then what annual amount of income he should manage for after retirement. तो इतना लंबा स्टोरी है, हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि रिटायरमेंट के बाद 1 साल का इनकम कितना चाहिए होगा. So that's once again step 1. और उसके बाद 90% of the value that you have found is the answer. इस क्वेश्चन के अंदर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ होता तो सर नॉमिनल रेट क्या इन्फ्लेशन वो नीचे दिया हुआ है, नीचे वो क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है जो आप पूछ रहे हो, वो 13 नंबर का क्वेश्चन है. सर इसमें जो ये जो 3+2 तो सिंपल ही करना है ना, वो फिशर की तरह उसका कोई नहीं, एब्सोल्युटली नो. सर आ जाता है आंसर. We can take 90% of 2,40,000 as also PV. No? Yes sir, And yes sir, also that is save also income. same answer. It will produce same answer. चलो आ गया सबका. यस सर. Okay. So then let's move further with question number 13. Continuation में है. So in the previous case, if Suman's life expectancy on retirement is 25 years, तब retire होने के बाद the retirement life is 25 years. He wants the same annual income as envisaged in the question for all the years in advance after retirement. So ऊपर जो था वो income अब चाहिए. What accumulated amount should he have on retirement for such an arrangement? Assume investment on retirement would provide a return or yield of 6% adjusted for inflation. तो 6% जो rate हमें दिया गया है, that is already which rate? It is real rate. तो हमें अब inflation ढूंढने की जरूरत नहीं है. So whatever we found in earlier question, यहाँ तक हम गिन चुके थे. So now follow the next steps and find out the answer. We will find out corpus. ये clear हुआ आपको पूरे स्टोरी में? नाइन 99114452. Correct. Same, sir. Same. Sure. Wonderful. यस सर सेम. सर मैं ऐसा पूछ रहा था, जैसे उस ऊपर जो दिया हुआ था अपन में 6% नहीं दिया हुआ होता, तो सर एक जो 2% से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन 3% है, तो सर जो रियल रेट कैलकुलेट करते हैं वो 3% से करते हैं या फिर 5% से करते हैं? रिटायरमेंट के बाद अगर वो 2% लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखी होती थी उन्होंने तो 5%, अदरवाइज 3%. ओके. One more. 15 तक करते हैं. Mr. Ram, age 45, saves 9% per annum, 2 lakh at the beginning of the year for the first 8 years, and then stops saving on account of certain financial problems. On retirement at age 65 years, he intends to keep aside 5 lakh. So, और यहाँ तक जो पढ़ा उसको टाइमलाइन पे ले लेते हैं. It will be easier for us to do. So he's 45 now and wants to retire at the age of 65. So exactly 20 years hence he wants to retire. जो भी accumulation आएगा उसमें से 5 लाख उसे साइड पे रख लेने हैं. And how much is the investment? So 2 lakh per annum is investment during this period. But वो भी कितने साल तक? 8 years. 8 साल तक. Whatever he accumulates for 8 years,
उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे. नो फर्दर कंट्रीब्यूशन बट मनी दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड विल कीप ग्रोइंग विद रेट ऑफ रिटर्न. 5 lakh is kept aside out of the accumulated amount of the above savings as liquid money for emergencies. ठीक है. And to invest the balance amount at 6% per annum, providing withdrawal of fixed amount every year for 20 years. तो बाकी का पीरियड हमारे पास है 20 years. चलो फिक्स्ड वाला तो लेते हैं, बट पहले 8th year के एंड पे कितना एक्यूमुलेशन आता है वो मुझे बताओ. हाउ मच इज द एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 8th year? 2 lakh invested. 24,04,207. 2207 So that is 24,04,207. 207. इतना एक्यूमुलेट हो गया 8th year के एंड पे. अब ये फ्यूचर वैल्यू को आप 12 years और आगे बढ़ाओ. No PMT, no? It is only PV and FV at the rate of 9%. 67,622,29. 6722 229. 222 सर. हाँ 9. अब उसमें 676. 6. यस सर. 67,62,229. करेक्ट. चलो तो अब इसमें से 5 लाख हटा दिए तो बचा इनके पास 62,62,229. This is the amount of money that should be used to fund the retirement income requirement. Correct? Clear यहाँ तक? आगे. अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि रिटायर हो गए, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का विड्रॉवल था, ईयर ऑन ईयर जैसे हम आगे बढ़ते विड्रॉवल की अमाउंट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? इट इंक्रीजेस. सो दैट इज द वेरिएबल और से ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ईयर ऑन ईयर. नॉर्मल केस जो हमने किया, ऊपर 10 नंबर का भी क्वेश्चन किया, उसमें रिटायरमेंट के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वर दे ग्रोइंग? आंसर इज यस, दे वर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. But here it has been specifically suggested that it has to be fixed every year. So पहले साल में जो withdraw होगा, exactly the same amount will be required for subsequent years. No adjustment of inflation. हालांकि ये क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट दिया ही नहीं है, but if it was given then also we would have ignored it because the requirement is fixed in amount. Correct? So 62,62,000 जो है उसको हम क्या ले लेंगे? इसको हम ले लेंगे PV N is equal to how many years? 20. I by Y given to us is 6 and we have to find out PMT in beginning mode. No real rate in this case. 51,5065. Correct. हमारा आंसर आ गया. तो रिपीट वापस करेंगे सर? क्या? तो मतलब रियल रेट क्यों नहीं लेंगे? आप बताओ, हमने रियल रेट क्यों नहीं लिया? आपको क्या पता चला? फिर मैं उसको करेक्ट करता हूँ. 51 Because of providing withdrawal of a fixed amount every year for 20. Exactly. हाँ, इन्फ्लेशन कब कंसिडर करेंगे? जब ईयर ऑन ईयर रिक्वायरमेंट आपका इन्फ्लेशन से बढ़ रहा हो. Got it. सिंपल है. चलो, then we are moving further with the last question of the day. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें. You can just flip the pages and you'll find out, अरे ये तो बहुत लंबा है. चलो, this is also interesting question to solve. So there has been a loan taken और लोन का स्टाइल कुछ इंटरेस्टिंग है. So first installment. So चलो पढ़ते हैं. Under education loan, the person receives 4 annual installment of 10,000 each, the first payment being made at present moment. So first year के end 0 पे 10, first year के end पे आपको 10K मिलेंगे, सेकेंड ईयर के एंड पे भी आपको 10K का लोन मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड पे भी 10K मिलेगा, एंड फाइनली दिस लोन इज टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 10th ईयर इन लम सम. बराबर. तो ये 10th ईयर के एंड पे पेमेंट अमाउंट कितनी होगी? दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट.
So one of the simplest way which I have produced here is कि एक काम करते हैं, सबकी पहले प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ढूंढ लेते हैं. So let us find out present value of all the amounts in today's terms, and whatever be the present value, let us take that amount to 10. That will give you the answer. मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा ये क्वेश्चन. So first find out present value of everything at 0 and then take that amount to end of 10th year. You would still be getting the answer. PV बताओ यहाँ पर. So tell me the PV. 78016. नहीं. PM 3673. 3673. 30 करेक्ट. सो जो 40,000 हमें ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स मिलने वाले हैं टोटल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए 36730. अब ये अमाउंट को सीधा हम 10th ईयर के एंड पे ले जाते हैं. सो टेक दिस अमाउंट एज PV, N10, rate 6, kind of that. Six five seven seven eight. 6577. Yes, sir. करेक्ट एकदम. बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे, हाँ, यू कैन थिंक अबाउट डूइंग दिस वे, बट नॉर्मली आप आगे बढ़ने का ही ट्राई करोगे. यू विल मूव फॉरवर्ड. You won't come backwards and then you go to end of 10th year. So there is one more solution which I try to show. देखते हैं कितना, means if that's clear or not. So PMT is equal to 10,000 in beginning mode. N is equal to 4. Same ही है. I by Y is 6. But मैं PV नहीं ढूंढ रहा हूँ. I am finding out future value. 46370. 46370. ये आंसर तो बराबर है. बट अब आपका टेस्ट हो जाएगा कि ये अमाउंट टाइमलाइन पे कहाँ है. At the end of 4th year. Where is it on the timeline? At the end of 4th year. Ratnani sir बता रहे at the end of 4th year. So anybody else? No one? सर थर्ड ईयर के एंड पे है ना. हाँ, यही. फोर्थ ईयर के बिगनिंग पे, थर्ड ईयर के. हाँ, बिकॉज बिगिनिंग अगर 4 लिया है तो बिगिन रहेगा, लेकिन ये थर्ड ईयर के अगर एंडिंग मोड चल रहा है तो वो थर्ड ईयर का एंड ही रहेगा. चलो मैं 100 रुपए 3 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ एवरी ईयर. ठीक है. 0 पे मैंने 100 इन्वेस्ट किया, फिर से 1 पे 100, 2 पे 100. ठीक है. तो अब इसका मैं फ्यूचर वैल्यू ढूंढूंगा. से PMT 100 लिया, बिगिनिंग मोड N3, I by Y 10 ले लिया, फाइंड FV. तो ये कैसे होगा? सो वेयर इज इट ऑन द टाइमलाइन? तो पहले पे मुझे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे 2 साल का, इस पे 1 साल का, एंड माय आंसर विल बी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. जब N3 रख रहे हो तो आपका आंसर सेकेंड, आपका N4 रख लो ना यहाँ पर, तो आपका आंसर थर्ड ईयर के एंड पे हो ही नहीं सकता है. योर आंसर हैज टू बी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर. एंड मोड में रखोगे तो लास्ट का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिगिनिंग में रखोगे तो लास्ट का इंटरेस्ट कंसीडर होगा. सो वन मोर इंटरेस्ट, वन मोर पीरियड इंटरेस्ट, दैट इज द बेसिक ऑफ TVM. सो ये वैल्यू मैंने बताया था टेस्ट हो जाएगा बराबर. सो दिस वैल्यू इज एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर बिकॉज N is 4. So calculator will take that value to end of fourth year. बराबर. अब सेकंड स्टेप तो काफी आसान है.
इसको मैं पीवी ले लेता हूँ. सर हो गया आ रहा है एक्चुअली. N is equal to 6, I by y 6, and find out FV. You will still you have the same answer in fact. ठीक है. केवल कैलकुलेशन बिगनिंग में होगी ना? हाँ, अब बिगिन में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं. राइट, चलो सी यू ऑन थर्सडे. बाय. थैंक यू सर. बाय. बाय सर. थैंक यू. बाय.